Hello children, good morning everyone. Today we are going to discuss the question answer and other exercise of the lesson quality. In previous session we have completed the explanation of this lesson. So let's begin with question answer. Question number 1. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? जो नरेटर थे ऑथर थे उनका ओपिनियन क्या था बूट मेकर को लेकर. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बूट मेकर? मिस्टर गैजलर. द आंसर इज द ऑथर हैड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैजलर. ही यूज्ड द बेस्ट लेदर एंड मेड ड्यूरेबल बूट्स. मिस्टर गैजलर वॉज वेरी skilled bootmaker. He always used the best leather and made durable boots. जो मिस्टर गैजलर थे वो बेस्ट लेदर यूज करके लॉन्ग लास्टिंग बूट्स बनाते थे. सो दिस वॉज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैजलर एज अ बूट मेकर. क्वेश्चन नंबर 2. Why did the author visit the shop so infrequently? The answer is the boots made by Gessler fitted well and lasted long. मिस्टर गैजलर जो बूट बनाते थे वो अच्छे से फिट आते थे एंड वो बहुत लंबे समय तक चलते थे. मीन्स वो टिकाऊ होते थे. लास्टेड लॉन्ग. सो द ऑथर डिड नॉट हैव टू विजिट द शॉप फ्रीक्वेंटली. इसीलिए ऑथर जो थे वो फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार शॉप पे नहीं जाते थे. नंबर 3. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? Answer. The author by the way told Mr. Gessler that the boots last made by him cracked. One day the narrator told Mr. Gessler that the boots last made by him cracked. एक बार क्या बोला ऑथर ने? मिस्टर गैसलर को बोला कि लास्ट टाइम मैंने आपसे जो बूट बनवाए थे वो क्रैक्ड हो गए थे. गैसलर कुडंट बिलीव इट. ही वॉज शॉक्ड एंड स्पीचलेस. अब गैसलर को ये बात का यकीन नहीं हुआ. ये सुनकर वो शॉक हो गए एंड स्पीचलेस हो गए. बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी ने उनके बूट के बारे में कंप्लेन की थी. So he promised to mend them or adjust the money in the next bill. तो उन्होंने मीन्स मिस्टर गैजलर ने ऑथर को प्रॉमिस किया कि वो क्रैक्ड बूट जो थे उनको वो मेंड करके देंगे एंड उसके पैसे भी वो नहीं लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? Answer. Mr. Gessler's complaint against big firms was that they did not bother about the quality of their product. जो बिग फर्म्स होती है, बिग शॉप्स होती है, वो अपनी प्रोडक्ट को लेकर परेशान नहीं होते हैं. मीन्स जैसी जैसी क्वालिटी जो है वो बेचते हैं. दे वांटेड टू सप्लाई द ऑर्डर एट द अर्लीस्ट. दे एडवर्टाइज्ड देयर प्रोडक्ट्स. जो बड़ी फर्म्स वाले ऑनर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उनकी प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइज करते हैं. दे पुश्ड पुअर बूट मेकर्स आउट ऑफ देयर ट्रेड. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? डिड ही रियली नीड देम? ऑथर ने इतने सारे बूट्स के पैर का ऑर्डर क्यों दिया? क्या उनको सच में ज़रूरत थी? द आंसर इज नो. The author in fact did not need so many pairs of boots. He placed order for them only out of sympathy for a talented and skilled showmaker. क्योंकि जब मिस्टर गैजलर ने बोला था कि ये बिग फर्म्स वाले जो है वो हमारा ट्रेड तोड़ रहे, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? ऑथर को उनके ऊपर कंपेशन हुआ. मीन्स उनके ऊपर काइंडनेस फील हुई. सच में ऑथर को इतने सारे बूट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी. ही प्लेस्ड ऑर्डर फॉर देम ओनली आउट ऑफ सिंपैथी फॉर अ टैलेंटेड एंड स्किल्ड शो मेकर. हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर. नाउ लेट्स सी वर्किंग विद द लैंग्वेज. स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स. यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस that follow.
Here you can see some phrases are given and also their meanings given. Number 1, look after. What is the meaning of look after? Look after means take care of. Number 2, look down on. Look down on means disapprove or regard as inferior. Number 3, look in. Look in on someone means make a short visit. किसी से थोड़े समय के लिए मिलना, it's called looking. Next, look into means investigate. लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट. किसी के बारे में हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड लुक इनटू. नेक्स्ट, लुक आउट मीन्स बी केयरफुल. नेक्स्ट, लुक अप. लुक अप मीन्स इम्प्रूव. एंड लास्ट, लुक अप टू मीन्स एडमायर, अप्रिसिएशन. इट्स कॉल्ड लुक अप टू. नाउ let's discuss the exercise given on next page of these phrases and meanings. Number 1, study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow. Students, we have just discussed some phrases and their meanings. Now here we have to write the answers. We have to fill these blanks with appropriate phrases. So let's start with number 1. After a very long spell of heat, the weather is blank at last. Once again I am repeating the blank. After a very long spell of heat, the weather is blank at last. Here in this blank we will write the answer as looking up. We just discussed looking up means improve. So here the correct answer we will write looking up. Then next, we have no right to blank people who do small jobs. In this blank we will write look down on. Means हमें जो small jobs करते हैं, जो minor work करते हैं, उन लोगों को लुक डाउन करवाना मीन्स उनको इन्फेरियर करना कोई हक नहीं है. सो हियर वी विल राइट लुक डाउन ऑन बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. लुक डाउन ऑन मीन्स डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फेरियर. सो वी हैव नो राइट टू रिगार्ड समवन एज इन्फेरियर हु डू स्मॉल जॉब्स. Number 3, Nitin has always blanked his uncle, who is self-made man. In this blank, we will write looking up to. Looking up to means what? Looking up to means admire. Nitin has always admired his uncle, who is self-made man. So here in this blank we will write looking up to. Next, the police are blank the matter thoroughly. The police are blank means looking into the matter thoroughly. I have just told you students what is the meaning of looking into. Looking into means investigate. So here in this blank we will write this phrase which means investigate. The police are investigate the matter thoroughly. Next, if you want to go out, I will blank the children for you. अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो. आपके चिल्ड्रन की मैं केयर करूँगा, उनको संभालूंगा. मीन्स किसी को संभालना, इट्स कॉल्ड लुक आफ्टर. So here in this blank we will write look after. Next, I promise to blank on your brother when I visit Lucknow. In this blank we will write look in. What is the meaning of look in? Look in means make a short visit. So here in this blank
What is written? I promise to look in. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मैं लखनऊ जाऊँगा तो आपके ब्रदर की स्मॉल विजिट, शॉर्ट विजिट करूँगा. So here we will write look in. And number 7, blank when you are crossing the main road. So here we will write look out. Look out when you are crossing the main road. Look out means be careful. So here we have completed question number 1 of working with the language. Now next question. In this question, each of the following words contain the sound sh in the beginning or in the middle or at the end. Here 3 columns are given. In the beginning, initial, middle and final. What we have to do? First, speak out all the words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table. Now we have to arrange the proper sh sound words in proper column. So let's start. Here I have already arranged words. First, sheep. In this column, initial means those words we have to write in this column which pronounce sh at the beginning of this word. For example, sheep, shriek, shore, sure and shoe. Now let's talk about medial. So here we have to write those words which pronounce sh in the middle of their words. Fashion. So here you can see sh at the middle of this word. Then anxious, portion, ashish, nation and pushing. In the last column, final column, we have to write those words who pronounce sh at the end of their words. For example, trash, marsh, fish, polish and mustard. Now, next exercise. In next exercise, in each of the following words, ch represents the same consonant sound as in chair. The words on the left have this sound initially. Those on the right have it finally. Speak each word clearly. For example, here feature is given. Which word is given? Feature. In this exercise, now we will write answers. In number 1, feature. So, underline the letters representing this sound in each of the following words. Now, in this word, which letter representing the sound ch, c, feature, ture. Then preaching, ch. Riches, here riches, ches, this letter representing this sound. Next, archery, so ch. Nature, beach, picture, then matches. And here in this last word, 2 letters representing same sound, ch, and then ch, church. In this word, 2 letters representing the same sound. I hope you all understood well. Now students, here we have completed the explanation and the discussion of all the exercises and question answers of this lesson. Bye everyone. Thank you.